Hello friends, I'm Kedar Shelar and my colleague Mitesh Bhatt. We welcome you all in this new video. Today's topic is monthly MIS report. MIS report as in Management Information System. What is Management Information System? It is a information system to the management which evaluate the business based on daily activities. Uh, it is very helpful in decision making and ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मंथली एमआईएस सिस्टम दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। ये जो एमआईएस रिपोर्ट है ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एमआईएस रिपोर्ट से पूरा बिजनेस मैनेजमेंट इवैल्यूएट करता है, डिसीजन ले सकते हैं कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तो, और प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। तो हम आज एमआईएस रिपोर्ट का एक टेम्पलेट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एग्जैक्टली कैसे होता है ये एमआईएस रिपोर्ट। लेट्स कंसिडर दिस एबीसी और XYZ प्रॉपर्टीज। सो initially we need to write down all the critical issues in the different towers. Let's consider this is a society of having three towers. Three towers are going on, and every tower has some critical issues. We need to write it down as we wrote here that tower 1, it had some issues regarding the plastering agency and waterproofing agency. When tower B it is need to start its flooring immediately. Then like tower 3 has road work and so on. Whatever there might be the problem, we need to write it down on the very first slide of the MIS report, that is critical issues. तो दोस्तों प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्लाइड जो है वो रहेगी क्रिटिकल इश्यूज की, जहां हमारे जितने भी बिल्डिंग्स चालू है, जितने भी प्रोजेक्ट्स चालू है, उनके जो क्रिटिकल इश्यूज है वो हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पुट करेंगे। तो मैनेजमेंट को ये आइडिया आती है कि कौन से प्रोजेक्ट पे क्या प्रॉब्लम है और डिसीजन क्या लेना है, कैसे लेना है, ये हाईलाइट करते हैं। Then milestone status. This is the sample milestone status of tower 1 that we have discussed before. We have these slabs like up to a plinth RCC work, then first slab basement, second slab till 13th slab, and then overhead water tank and LMR. We have these dates. These are baseline dates. We have these dates in our MSP schedule, like we discussed the baseline schedule that which we have used for the tracking purpose. So these dates we will get it from there. Then target date, the 10th of August is the target date of the project, the final date, and the next column is achieved date of completion. It is actual date on which these milestones has completed. So like let's take this example. Up to plinth RCC work, it is targeted 15 February, but it is completed on 10th March 2019. So the delay is 23 days, which is mentioned in the next column. So this is how the milestone status is reflected in this MIS report. तो दोस्तों जो दूसरी स्लाइड है MIS रिपोर्ट की, वो है माइलस्टोन स्टेटस। जो माइलस्टोन होते हैं, माइलस्टोन के उनका स्टेटस क्या है वो हम
यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट स्लैब है उसका डेट है 15 फरवरी एंड उसका कंप्लीशन डेट है 10 मार्च, तो इसमें डिले है 23 डेज। तो ऐसे हम हर एक स्लैब का नहीं तो हर एक माइलस्टोन का एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं इन एमआईएस रिपोर्ट में। हाँ, ओके। इसके ये जो माइलस्टोन स्टेटस है ये मैनेजमेंट को बताता है कि बेसलाइन क्या है, अचीव डेट क्या है और उसमें डिले कितना है। तो प्रोजेक्ट का एंड डेट क्या होगा उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसे ये डिसीजन मैनेजमेंट ले सकता है। देन साइट प्रोग्रेस फोटोज, what management need is a site progress report. The three photos are to be discussed. Like the one is the current photo and the day on which this report uh, is preparing, and there are two other photos like 7 days before and 14 days before. So management will get idea of the progress by this pictorial report. तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है यहाँ हम एक पिक्टोरियल रिपोर्ट भी मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं, जहाँ आज का फोटो मतलब जिस दिन हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं उस दिन का फोटो और पिछले 7 दिनों के पहले जो प्रोग्रेस था और 15 डेज बिफोर या 14 डेज दो वीक पहले का जो फोटो था, तो वो कंपैरिजन में मैनेजमेंट को एक आइडिया आती है कि प्रोजेक्ट अभी कहाँ जा रहा है बाय दिस पिक्टोरियल रिपोर्ट। In the next slide we have monthly targets. Like we have let's take one of the example. Let's say the this monthly target is for tower 1. So these activities are considered in the month of March, and we have to tell the management that what is our planned versus actual. This is target date and the actual date. So we have these columns. Let's check. This is the PQ is the quantity unit for the quantity completed up to the previous month, completed up to completion target for this month. Then this is the target. This is a target means planned and actual means actual. Then this value is divided into number of weeks in the month. So we have these different activities like brickwork, fabrication, internal plaster and internal plaster to walls. These are the planned activities for the month of March. So let's take this example. This is the brickwork for commercials. The quantity is for 15. There are 15 shops. Till the February, nothing is completed. But for the March, we have considered 15% of the 15% completion of the 15 shops. So we have these values, like the target is planned target, which is 15%, that we have divided into 3 weeks, that is 5%, 5%, 5%. It will give you 15%. And the actual, we haven't started this activity yet, that is why this is 0, 0, 0. So let's take this example. We supposed to finish this brick masonry 100%,
up to last month we have completed 20%, and for this month we have planned 80%. So the planned value is 80%, and we have um, considered this 80% for the week 1. So in the first week of the March, this all the work of the brick masonry will be finished. But actually, on site, the total completed percentage is 25%, and in the first week we have completed 5%, and the second week we have completed 30%. So this is the actual progress. So management will get idea what is going on the project. So why this is happening, and why uh, what will be the uh, you know the preventive measures to avoid delay in future. So this is how this planned versus actual uh, target of this month is to be prepared. तो दोस्तों, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है अपने MIS का, जहां हम अपना दिस मंथ टारगेट बताते हैं मैनेजमेंट को। तो ये है डिफरेंट एक्टिविटीज़, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो हमने इस मंथ में प्लान की है, वो हमने एक कॉलम में लिखा। पहले हम समझते कि ये कॉलम क्या क्या है। पहले एक्टिविटी, उसके बाद उसकी क्वांटिटी, उसका यूनिट, कंप्लीटेड अप टू प्रीवियस मंथ, और प्लान्ड फॉर द करंट मंथ। तो टारगेट मीन्स दिस आर द प्लान्ड एंड एक्चुअल हिट। ये जो टारगेट है, मतलब ये टारगेट इज प्लान्ड परसेंटेज, और एक्चुअल है वो एक्चुअल परसेंट है, कितना काम एक्चुअली हुआ है। देन आगे है ये फॉर द पूरे मंथ का कितना प्लान्ड हमने किया है और कितना एक्चुअल हुआ है, ये इस कॉलम में रिफ्लेक्ट होता है। और यही वैल्यूज हम वीक वाइज डिवाइड करते हैं, वो यहाँ हमने डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं फॉर टावर वन के लिए हमारे एक्टिविटीज़ हमने प्लान किए: ब्रिक वर्क, फैब्रिकेशन, इंटरनल प्लास्टर प्रिपरेटरी वर्क, और इंटरनल प्लास्टर वर्क टू द वॉल्स। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो ब्रिक मैशनरी फॉर कमर्शियल्स। इस प्रोजेक्ट में 15 शॉप्स है, इट इज 15 क्वांटिटी, शॉप्स इज यूनिट नंबर्स। अभी तक टिल February 20 कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, मतलब ये काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। पर मार्च 2020 में प्लान किया है 15% ये काम पूरा हो सकता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, प्लान जो है 15%। और वो कैसे पूरा होगा, तो हमने प्लान किया वीक 1 में 5% होगा, वीक 2 में 5% होगा, और वीक 3 में 5% होगा। पर एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ सब 0 0 0 0 आ गए। तो ये प्लान्ड है 15% बट एक्चुअली 0%। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये ब्रिक मैसनरी का, जिसका मतलब ये काम है वो 100% हमको करना है। तो अभी तक टिल February वी हैव कंप्लीटेड 20%। February तक 20% काम हुआ है, और बाकी का 80% जो 100% पूरा करेगा वो मार्च में प्लान किया है। तो टारगेट है 80% और पूरे मंथ के लिए, और हमने प्लान किया ये 80% वीक 1 में ही पूरा होएगा। पर इसके अगेंस्ट हम एक्चुअल वैल्यू जब देखते हैं, तो एक्चुअली काम बस 25% हुआ है। वीक 1 में 5% हो गया, और वीक 2 में 30%। So my mistake, this is 35%. I need to change it, sorry. So ये 35% प्रोग्रेस है अगेंस्ट 80% ऑफ प्लान्ड वैल्यू। अभी ये जो वैल्यूज है प्लान्ड और एक्चुअल, ये कहाँ से आ गए?
तो ये जो प्लान वैल्यू है, ये हमने जो MSP शेड्यूल किया है उसमें एक्टिविटी वाइज ये वैल्यू आता है जैसे हम प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, और एक्चुअल जो है वो एक्चुअल साइट पे जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम जो प्रोजेक्ट ट्रैक करते हैं वहाँ से ये वैल्यू आती है. So this is how the this month target is given against your plan versus actual progress. The next page that management want is what is next month target. So these values are coming from the MSP schedule itself. So let's take this example. For the same tower, we have these activities considered for the next week. There is fabrication, internal plaster preparatory work, internal plaster for further floors, and the internal gypsum plaster. So these are the activities which we have scheduled. So we have their quantities, how much we have considered for the month of April. This is the unit for the same. Till March we have completed nothing. The planned is, these are the planned values. So in the next column we have the planned versus actual values. Actual, it will be 0 because work hasn't started yet. But targeted value, these are the planned values which are coming from the MSP schedule for the next, if we consider the date range of the April 2020. So दोस्तों अगले स्लाइड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगले मंथ का टारगेट कितना होगा अप्रैल 2020 का. मैनेजमेंट हमने ये प्लान किया है नेक्स्ट मंथ फैब्रिकेशन, इंटरनल प्लास्टर, जिप्सम, ये सब एक्टिविटीज टावर ए में या टावर 1 में हो सकती है या होगी. तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका यूनिट क्या है, ये हमने इधर मेंशन किया है. जैसे कि फैब्रिकेशन वर्क है, 10th फ्लोर का MS रेलिंग और ग्रिल का काम करना है. कितने फ्लैट्स का करना है, तो 10 फ्लैट का करना है. अभी तक कितना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, 0. प्लान कितना किया है, 10 का. तो अपना टारगेट कितना है, 10 का. और कब होगा ये पूरा, तो पहले वीक में. और जब ये मंथ खत्म होगा तो यहाँ एक्चुअल में कितना हो गया ये वैल्यूज इधर आएंगे. बट दीज आर द, ये जो वैल्यूज है, जो प्लान्ड वैल्यूज है, वो मैनेजमेंट को पहले ही पता होने चाहिए कि आगे का महीने का टारगेट कितना है. तो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है. So for tower 2 and 3, tracking would be the same as tower 1 as we have discussed before. So दोस्तों टावर 2 और 3 का भी जो MIS रिपोर्ट रहेगा वो सेम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने टावर 1 का भी डिस्कस किया. So ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की. Thank you so much for watching this video.